Good morning, students. Today we are going to discuss practice set 1.3. I have already asked you to solve first four examples, so you can check whether you have written it correctly or not, or you can write these examples by pausing video. So here, first of all, in first example, you are required to identify whether triangle ABC and EDC are similar or not. So, and if similar, by which test? This is very simple and basic question. We can easily observe from figure that angle ABC is congruent with angle EDC. In short, angle B is congruent with D. And in triangle ABC and DEC, they have common angle C. So, two angles of one triangle are congruent with two angles of other. So, triangles are similar by AA test. One-to-one correspondence means exactly you have to write these vertices which are equal, that is the angles which are congruent. So B is congruent with D, C is congruent with C, so obviously A is congruent with E. So correspondence is ABC, one-to-one corresponds with EDC. Now in second example, to check whether the triangles are similar or not, here we have PQ upon LM, it is 6 by 3, it comes out to be 2. QR upon MN, 8 upon 4, again it is 2. PR upon LN, 10 upon 5, again it is 2. All three sides of one triangle are proportional to corresponding three sides of other. So two triangles are similar by S test. ये भी already solved example में exact ऐसा ही सम हमने already किया है. So this is for the sake of your revision. We have completed here two examples from practice set 1.2. In question number 3, we have two poles PR and AC which are erected on the ground, and the shadow cast by these two poles at the same time पर ये दो poles जो है PR और AC, इनका ये shadow है. जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे अगर पीछे लाइट होती तो ऑब्वियसली शैडो इस फॉर्म इस साइड में पड़ता. तो उसी तरह सपोज इस साइड में सन है, तो ये दो पोल्स के ये शैडोज है. इस शैडो का लेंथ 6 मीटर है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? दैट इज लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय दिस पोल AC. अब सिंपल लॉजिक, थोड़ा सा फिजिक्स इसमें. जब भी लाइट ट्रैवल होती है लॉन्ग डिस्टेंस से, इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जब भी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल होता है ना, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है. अब जो 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट थे उनको मैंने 9 के वक्त भी बताया था ये पार्ट. तो ये लाइंस जो है, दिस लाइंस मूव पैरेलल टू ईच अदर. अब ये जो लाइंस पैरेलल होते हैं तो ऑब्वियसली दे कास्ट शैडो ऑन द सेम साइड. तो यहाँ पर एक पहला पोल है जिसका शैडो इस साइड में पड़ा, इसका नाम क्या था? PRQ. ओके. और दूसरा पोल है आपका AC. तो ये जो AC पोल है इसका शैडो भी आया है इस साइड में. तो अब देखो ये दो ट्रायंगल्स में, यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस टू ट्रायंगल्स, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं लाइक दिस, एंड लेट द लेंथ ऑफ शैडो इज लाइक दिस. ओके. तो ये जो सन रेज है, दिस रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये पैरेलल है इसलिए, एंड दिस टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसलिए एंगल Q ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा B के साथ और P कॉन्ग्रुएंट रहेगा A के साथ. एज शैडो इज कास्ट एट द सेम टाइम पर शैडो कास्ट हुआ है, इसलिए ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये है कॉन्ग्रुएंट. बस यही लॉजिक है. अब सिंपल आपके सामने दो ट्रायंगल्स हैं जिसके दो एंगल्स इक्वल है. सो एज एंगल्स आर इक्वल यू कैन से दैट दे आर सिमिलर. ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल. टेकिंग दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन यू कैन इजीली गेट वैल्यू ऑफ x एज ऑब्वियसली 12. तो ये अगर 2:3 रेशियो है तो ओरली भी ये 2:3 आएगा. तो 4 2s are 8, 4 3s are 12. ओरली बताया बट ओरली लिखना नहीं है एग्जाम में, जस्ट
आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ये 2:3 है तो ये भी 2:3 आएगा। सो फर्स्ट वी राइट हियर एज शैडो इज कास्ट at the same time as shadow is cast at the same time, corresponding angles form sun rays are congruent. That is, angle PQR is congruent with angle ABC. You can call it equation 1. Now simply you choose the given two triangles. आपके जो दो triangles है उनको choose कीजिए. In triangle PRQ and triangle ACB, we have angle PRQ is congruent with angle ACB because each angle is 90. Then angle PQR, it is congruent with angle ABC from equation 1. Two angles of one triangle are congruent with two angles of other. So you get triangle PRQ similar with triangle ACB by AA test. As two triangles are similar, ratio of corresponding sides are equal. So you get PR upon AC. Corresponding sides का ratio equal होता है if they are similar. PR by AC is equal to QR upon BC. Corresponding sides of similar triangles. So simplifying now, PR का वैल्यू कितना है 4 upon AC है आपका 8, QR is 6. We are required to find BC. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. Cross multiplying, you will get here BC is equal to 6 into 2. BC is equal to 12 meters. Therefore, we can conclude that the length of shadow cast by other pole is 12 meters. Always express your answer in words. वर्ड प्रॉब्लम में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर लास्ट में आपको एक्सप्रेस. इन क्वेश्चन नंबर 4 we have to prove that triangle CPA is similar with CQB. So simple as we have solved in first question. Here angle CPA and CQB are equal, each 90. Angle P is congruent with Q. ये दो एंगल्स इक्वल है. और यहाँ पर एंगल C congruent है C के साथ. सिंपल. So two angles of one triangle CPA के ये दो एंगल CQB के दो एंगल के साथ इक्वल. So triangles are similar by AA test. Triangle similar तो corresponding sides का रेशियो ले लो. जो sides given है वो रेशियो में लेना है. And substituting values you can easily get AC. So here we write in triangle CPA and triangle CQB. In these two triangles we have angle CPA congruent with CQB. Reason each 90. Angle C. So I write here suppose ACP. यहाँ पे जो सीक्वेंस हम लिखते हैं वही सीक्वेंस यहाँ पे लिखना है. It is equal to angle BCQ. This is common angle. Therefore, triangle CPA is similar with CQB by AA test. तो ये दो ट्रायंगल्स हो गए आपके सिमिलर. अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो. सो AP गिवन है आपको तो मैं लिख सकता हूं AP अपॉन BQ. जो सीक्वेंस एक ट्रायंगल के लिए लिया है आपने वही दूसरे के लिए लेना है. AP upon BQ will be equal to AC upon BC. They are corresponding sides of similar triangles. तो AP upon BQ
AP है आपका 7 upon BQ is 8, it is equal to AC फाइंड करना है और BC है आपका 12. So cross multiplying you get 7 upon 8 into 12 equals to AC. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 21 upon 2 AC 21 upon 2 आया, मतलब it comes out to be 10.5 units. So length of segment AC comes out to be 10.5. So simple AA test से triangle similar, taking corresponding sides in proportion, you can get value of AC.